Is Hello guys, my name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel My English Magazine. Today I explain to you gerund. This is the very important topic. Gerund क्या है? Gerund. Gerund क्या है? Gerund. What is gerund? In Hindi and non-infinitive verb का वे रूप. I explain this gerund in Hindi. gerund नॉन फिनिटिव वर्ब का वह रूप जिसके अंत में आईएनजी लगा हो. जिसके अंत में क्या लगा होता है? आईएनजी. जिस वर्ड के अंत में आईएनजी लगा है वो जेरंड है. तथा जिसका प्रयोग नाउन की तरह, जिसका प्रयोग कैसे करते हैं? नाउन की तरह किया जाता है. जिसका प्रयोग नाउन की तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो वह जेरंड कहलाता है. तो जेरंड का प्रयोग, परिभाषा और उसका उपयोग कैसे करते हैं? उदाहरण. एवरीथिंग आई एक्सप्लेन टू यू. नॉन फिनिटिव वर्ब के तीनों भेदों में से सबसे महत्वपूर्ण भेद जेरंड है, क्योंकि ये नाउन के फॉर्म में वाक्य में प्रयुक्त होता है. सबसे पहले तो ये कैसे यूज़ होता है? वाक्य में नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है. इसके नॉन फिनाइट वर्ब के तीन भेदों में से सबसे महत्वपूर्ण भेद जेरंड है, क्योंकि ये नाउन के फॉर्म में वाक्य में प्रयुक्त होता है. इसका प्रयोग वर्ब के रूप में ना होकर बल्कि नाउन के फॉर्म में होता है, अर्थात ये नाउन की तरह ही सभी कार्यों को संपन्न करता है. या यूँ कहें कि जेरंड एक प्रकार की नाउन है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पर कार्यरत रहता है. जेरंड एक प्रकार का वर्ब है जो कभी भी वर्ब की तरह कार्य नहीं करता है. वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़कर जेरंड बना सकते हैं और इसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं. ये अपने फॉर्म और प्रयोग के महत्व के कारण प्रतियोगिता एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है. इसलिए शिक्षक भी इसे बड़ी सावधानी से पढ़ाते हैं. यहाँ उन सभी तथ्यों का अध्ययन विस्तार से करेंगे जो बोर्ड और कंपटीशन के लिए आवश्यक है. टेबल ऑफ कंटेंट्स. जेरंड क्या है? व्हाट इज़ जेरंड? जेरंड का उदाहरण, एग्जाम्पल. जेरंड का प्रयोग, यूजेस. सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग. ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग. प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग. कॉम्प्लीमेंट के अर्थ में जेरंड का प्रयोग. जेरंड के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य. जेरंड क्या है? व्हाट इज़ जेरंड? नॉन फिनाइट वर्ब का वे रूप जिसके अंत में आईएनजी लगा हो तथा जिसका प्रयोग नाउन की तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो वह जेरंड कहलाता है. प्रयोग एवं बनावट के अनुसार इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब से बनकर नाउन की तरह कार्य करता है. जेरंड की परिभाषा. ए जेरंड इज अ वर्बल नाउन. इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ing to a verb. It functions both as a noun and verb.
जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तब उसे जेरंड कहा जाता है। चूँकि ये वर्ब में बना हुआ है इसलिए इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न फॉर्म में किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में अथवा कर्ता के स्थान पर। ऑब्जेक्ट टू अ ट्रांजिटिव वर्ब, कर्मक क्रिया के कर्म के स्थान पर। ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के कर्म के स्थान पर। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। इसे सरलता से समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखना आवश्यक है। जेरंड का उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स ऑफ जेरंड। उदाहरण महत्वपूर्ण तथ्यों एवं नियमों को समझाने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए जेरंड से संबंधित कुछ आवश्यक उदाहरण यहाँ उपलब्ध हैं जो इसे भिन्न भिन्न भाव में व्यक्त करता है। वे शतरंज खेलने का शौकीन है। He is fond of playing chess. तैरना एक कला है। Swimming is an art. मुझे बोलना अच्छा लगता है। I like speaking. इसका काम बागवानी करना है। His work is gardening. वे धूम्रपान की आदी है। He is addicted to smoking. अपना काम करने के बाद वे खुश है। After finishing his work, he has a happy. उससे हंसे बिना नहीं रहा जाता। He can't help laughing. मुकेश को बोले बिना नहीं रहा जाता। मुकेश can't help speaking. अंग्रेज़ी सीखना कठिन है। Learning English is difficult. हिंदी बोलना सरल है। Speaking हिंदी इज़ easy. जेरंड का प्रयोग, यूज़ ऑफ जेरंड इन हिंदी। तो इस तरह से मैंने आपको जेरंड के बारे में बताया। एक दिस इज़ माय नोट्स फ्रॉम वेयर आई एक्सप्लेन टू यू जेरंड। नाउ आई एक्सप्लेन टू मोर अबाउट जेरंड। तो अब मैं आपको जेरंड के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताना चाहती हूँ। डेफिनेशन एवरीथिंग वो मैंने आपको बता दिया। अब दे बाउंडेड ओवर देन शेयर्ड लव ऑफ हाइकिंग। आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन स्विमिंग। व्हाट डू दीज टू सेंटेंसेस हैव इन कॉमन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन था, मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। They bonded over their shared love of hiking. I hope to set a new record in swimming. What do these two sentences have in common? They both end in verbs, but those verbs aren't just verbs. They are gerunds. Think about what these verbs are doing. For a moment, they aren't describing the action in these sentences like verbs normally do. That's because gerund do not describe action. They act as a noun. Gerund are a flexible, useful type of word because they enable use to speak and write about action in a more abstract way, positioning those action as a response for specific outcomes, hobbies and receivers of a subject's action. Now I explain more about that gerund, what is gerund and what is the function. A gerund, a pronounced
G-E-R, J-U-N-D, gerund, is a verb that's acting as a noun, but that we mean that the word that describes the action that's happening, like biking, thinking, running, or speaking, becomes a thing, a concept that can now be the sentence, subject, direct subject, indirect object, or the object of a preposition. It doesn't stop being a verb, but the role it plays in a sentence shifts from describing the action is being a focal point. Here are two examples of a sentence that contain gerund. As a food blogger, eating is an involved production for Shoshana. Fazal turned off his phone and shut the door so he could focus on studying. As you see in these examples, gerund are verbs in the present participle form. This means they are the root verb plus ing. Now, gramming, wondering. But that's not what makes them gerund. To be a gerund, a verb has to act as a noun. In its sentence, present participle verbs are not gerund when they describe the action in a sentence, like the verbs in those. She is seeing the painting for the first time. As I was walking to school, I tripped on uneven pavement. Gerund aren't the only instance where a word or group of words play a role that's typically taken on by another type of word. For example, an adverbial clause is a clause that functions as an adverb. An adjective phrase is a phrase that describes a noun the way an adjective typical does. Gerund phrase. A gerund phrase is a phrase that contains a gerund and a modifier or an object, and to some cases both of these. Here are three examples of gerund phrases. Apologizing to them. Underground exploring. Running with scissors. A gerund phrase, just like a gerund, acts as a noun in a sentence. Take a look at how these gerund phrases play this role. Apologizing to them is important to me. My brother enjoys underground exploring with his friends. I don't advise running with the scissors at this time forever. A phrase is a small group of words that communicates a concept but can't be an independent sentence on its own. There are lots of different kinds of phrases in English, like verb phrases, adjective phrases, prepositional phrases, and noun phrases. Gerund can also be used in conjunction with the phrasal verbs. To-word phrase or preposition to communicate a unique concept that can't be expressed by either of the words
Individually common phrasal verbs include figure out, check into, take over. And here are a few sentences that demonstrate how phrasal verbs and gerund can work together. Try as I might, I just can't figure out programming. I am worried my mother-in-law will take over cooking when she arrives. Types of gerund. There are 6 types of gerund. I subject biking in my newest hobby. Subject complement my preferred commuting method is biking. Direct object, I love biking. Indirect object, my sister gave biking a try. Object complement, I see myself biking every day. Object of a preposition, I blocked out a few hours this Sunday for biking. Gerund are almost as versatile as actual nouns. Just like nouns, they can be replaced by pronouns. Biking is my newest hobby, so I blocked out a few hours on Sunday for it. Gerund and infinitives. Gerund are not the only kind of verb that act as nouns. When you need to use a verb as a noun, you can also turn it into an infinitive. An infinitive is the word to plus a verb's root. There are 2 ways you can use an infinitive: as a noun that communicates a single concept, and as an adjective to describe a noun. Within the sentence, here are a few examples with the infinitive bolded. I brought us some lemonade to drink with lunch. Adjective. To err is human. Noun. I hope there are magazines to read in the waiting room. Adjective. We love to travel, but we couldn't afford it last year. Noun. As you can see, infinitive are similar to gerund, but they aren't exactly the same. In a sentence where the infinitive acts as a noun, you can easily swap in a gerund and it will still make sense. We love traveling, but we couldn't afford it last year. Erring is human, but you can't always go the other way, notably when the gerund is the object of a preposition. I blocked out a few hours this Sunday for to bike. You could remove the preposition in this sentence for, and it would make sense. I blocked out a few hours this Sunday to bike, but if you do this, you no longer have a prepositional phrase. In contrast, some transitive verbs can work only with an infinitive. Take a look at these examples. I plan to dance. I plan dancing. I will decide to stay. They will describe staying. An easy rule to keep in mind is that you should use an infinitive verb when you are discussing something that's abstract, not real, or not only might happen.
That's where she plans to propose, and use a gerund when you are discussing something that's specific, real, or has already happened. The attic was absolutely perfect by writing. How do you create a gerund? Now I think it's today it's enough, and I continue this lecture, this lesson on my next video. So guys, you're watching my channel, my English magazine. Thank you very much. My name is Sangeeta Mehta, and you're watching my channel, my English magazine. Thank you very much.